Welcome, dear learners, to the FaroFocus, where guidance and precision leads to your growth. In this NEET बायोलॉजी सीरीज मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज की इस लेक्चर में हम सभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब तक की हमारी लेक्चर सीरीज़ में हमने रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन कर लिया था, उसका मकसद क्या था किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन में वो जान लिया था, उसके टाइप्स जान लिए थे, एंड देन वी फोकस्ड ऑन फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस किसी ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, ये सब कुछ हमने जान लिया था। नाउ वी शैल फोकस on describing the reproductive system of human beings. So हम focus करेंगे reproductive system of human beings. तो reproductive system of human beings जो है, अगर हम उसकी बात करें तो it contains two categories of organs, ठीक, और इन organs को बोलते हैं reproductive organs. Okay, so they are composed of या formed by reproductive organs. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये वो ऑर्गन्स है जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हो। ऑर्गन्स विच प्ले अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वी कैन राइट हियर प्ले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम देखते हैं उन्हें दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। व्हाट आर दोज टू कैटेगरीज? पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरी कैटेगरी होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो वी कैन राइट हियर वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स and the second category is considered as accessory or secondary sex organs. Now when we say primary sex organ, ये वो सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे और दूसरी चीज़ सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो वी कैन राइट हियर ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन नंबर वन formation of gametes, that is the process of gametogenesis. So we can write here number one is what? Formation of gametes, that is gametogenesis, and secondly they are involved in production of sex hormones, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछूं तो क्या एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं इनके? वेरी इजी टू गिव एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। जैसे मेल्स के अंदर टेस्टीज की बात की जाए तो टेस्टीज जो है वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी करते हैं और मेल सेक्स हार्मोन जो कि एंड्रोजन्स हैं उन्हें भी सिक्रीट करते हैं। सो दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स यू कॉल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टू बी व्हाट? ओवरीज, because they are again involved in the production of ova, the female gamete, and the production of female sex hormones, namely what? Estrogen and progesterone. That is why ovaries are primary sex organs in females. Now what are the accessory or secondary sex organs? Accessory या secondary sex organs जो होते हैं बालकों, ये इन्वॉल्व होते हैं कई सारी अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एड करती है। जैसे they are involved in providing environment for fertilization. A proper environment for fertilization is required, which it is often said कि secondary या accessory sex organs ये environment provide करने में involved होते हैं। They are again involved in gamete storage, nourishment and transportation of gamete as well. Thirdly, they are also involved in the act of copulation or intercourse
or coitus, act of coitus, copulation or sexual intercourse. So इनमें से किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में अगर कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व है और ये ऑर्गन्स अगर गैमीट नहीं बना रहे हैं, सेक्स हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, देन दीज ऑर्गन्स आर रिफर्ड टू एज व्हाट, एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. बी इट वेरी क्लियर, accessory sex organs are not involved in gamete production or production of sex hormones. ये किस में involved होंगे? Either in providing an environment for fertilization or in gamete storage, their nourishment or transportation to the site of fertilization. Or they may also be involved in the act of intercourse, sexual intercourse, copulation जिसे हम कह देते हैं या coitus भी कह देते हैं. So these are एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. आप एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ सकते हो, जो हम अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल के जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानने को आपको मिलेंगे. सो नाउ यू नो व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. सो वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड to understand how does a male reproductive system look like and how does a female reproductive system looks like. So we shall begin our discussion with male reproductive system. So we will be focusing on human male reproductive system. When it comes to human male reproductive system, students, we can divide human male reproductive system to have two kinds of organs, again that we learned just before. What are the two categories of organs? Primary sex organs and secondary sex organs or accessory sex organs. So we can have two categories. One is called as primary sex organs. The second is called as accessory or secondary sex organs. So primary sex organs and second category is accessory or secondary sex organs. Now, for the primary sex organs in humans, we do have what? A pair of testes. In males, pair of testes serve as primary sex organs. Why? Because they are involved in production of sperms, or I can write formation of sperms and secretion of androgens which are often referred to as male sex hormones. Okay, now when it comes to accessory or secondary sex organs in human males, we can divide it into three categories. How many categories we can divide it, students? Into three categories we can divide them. What are those three categories? The very first category comes out to be accessory ducts. The second category comes out to be accessory glands. And the third category comes out to be external genitalia. So these are the three categories in which the accessory or secondary sex organs of human males can be divided into. When it comes to accessory ducts, the ducts can again be categorized into two groups. Some of the ducts which runs inside the testes, those are called as intratesticular ducts. These ducts runs inside the structure of testes, so they are called as intratesticular ducts. And some of the ducts runs outside the testes and are called as extratesticular ducts. Now, if I have to mention sequentially what are the ducts in intratesticular ducts, you will come to know a straight tubule called as tubuli recti, from which sperms move to a network of duct called as retetestes, and then into vasa efferentia or ductus efferentus, even you can write them. From these vasa efferentia, the sperms move out of the testes into epididymis,
then into vas deferens or vasa deferentia, even you can call them, then into ejaculatory duct, and ultimately into urethra. So these are the male accessory ducts. See, I will be numbering them very uniquely. You must follow the numbers just because I am writing like tubuli recti 1, then rete testis 2, then vasa efferentia 3. Then I write epididymis 4, vas deferens 5, ejaculatory duct 6, and urethra 7. What does these series explain? These series also help us to explain the path of sperms through the male reproductive system. So if I say 1 through 7, 1 through 7 or 1 to 7, 1 to 7, what does it signify? It signifies the path of sperms through male reproductive ducts. Male reproductive system में स्पर्म्स किस रास्ते से जाते हैं उसको ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दर्शाता है, डिपिक्ट करता है. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 1 to 7 showing the path of sperms through male reproductive ducts. Okay, now we have to look at the secondary sex organs, which are accessory glands. In human males, you will find 3 kinds of accessory glands. If we are to name them, one is a pair of seminal vesicles, a pair of seminal vesicles. Then there is an unpaired single prostate gland, and again we have got a pair of bulbourethral or Cowper's gland, a pair of bulbourethral or Cowper's gland. Let us number them again. So if I ask you now, students, how many seminal vesicles are in human male reproductive system? So the answer will be 2, because there is one pair. How many prostate in human males? So we will say one single prostate gland, because it is unpaired. And how many bulbourethral or Cowper's? So again one pair, so total 2 bulbourethral glands. Now thirdly, when it comes to external genitalia, the male external genitalia consists of a penis and scrotum. Penis and scrotum. This 3 categories of secondary sex organs you do see. Now what are the functions of these 3 particular structures? Accessory ducts are meant to store, nourish, maturation and transportation of gametes. Glands again helps in the transportation and nourishment of gametes. External genitalia helps to transport gametes into the female reproductive system. Here they are involved in the act of copulation. All these things we will be writing when we will be discussing in detail about each of these reproductive structures. Now we shall move forward describing the structure of human testes. We will begin explaining first the primary sex organs and then the structure of secondary sex organs. So let us begin with the structure of testes in human male. So when it comes to testes in human males, so what all things we must be remembering about testes? The first is their shape. The second is their size. Third is their color. And the fourth is their location. So that basic information can be gathered about human testes. So when we look at the shape, they are oval shaped. What is their shape? They are oval shaped. When it comes to their size, they are 4 to 5 centimeters in length and 2 to 3 centimeters in width. Their colors comes out to be pinkish, and their location, very important. Students' questions often come over this, that where are human testes located? So they are located
outside the abdomen, very important student, outside the abdomen, for which we use the term extra abdominal. Which term we use, students? Extra abdominal. And outside the abdomen, that is extra abdominal, in a pouch like structure, in a pouch like structure called scrotum. Now the question comes, why are testes located outside the abdomen in this structure called as scrotum? So इसका जवाब ये है कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, लगभग 35-35.5 डिग्री के आसपास। इंसानी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, उस पर स्पर्म वायबली नहीं बन सकते, तो हमें टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल पाउच के अंदर रखा गया है। इससे ये इंश्योर हो पाता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के मुकाबले 2 से 2.5 डिग्री कम बना रहे और वायबल स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। सो वी कैन राइट हियर, बिकॉज it keeps the temperature of testes 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature, which therefore ensures viable sperm formation. Very important student, when I use the word viable sperm formation, that means जिंदा फंक्शनल लाइव स्पर्म्स का प्रोडक्शन। ये तभी हो सकता है जब टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के मुकाबले 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बना रहे। इसके लिए टेस्टिस को कहाँ रख दिया गया? एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टूडेंट, सो आई एम राइटिंग हियर A/R. यू कैन रिमेंबर इट इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन्स, यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन। नाउ जब हम इंसान की बात करते हैं तब तो हमें पता चल गया कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। Now again some type of questions might come in the minds of students that क्या सभी mammals के अंदर testes extra abdominal होते हैं? So we have a question that do all mammals have extra abdominal testes? So the answer to this question is no. सभी mammals के अंदर testes extra abdominal नहीं होते हैं। So if I say the answer no, then we have to give some examples like elephants and cetaceans. Cetaceans are nothing but your aquatic mammals, which includes whales, seals, dolphins. All of these have intra-abdominal testes. And one more thing, all the egg-laying mammals as well can be included in the list. So elephants, cetaceans, prototherians. Prototherians means egg-laying mammals. Okay, so I am writing here prototherians, which are what? Egg-laying mammals. Cetaceans were aquatic mammals. तो याद रखिए सभी mammals के अंदर testes extra abdominal नहीं होते हैं। जैसे elephants, aquatic mammals और egg-laying mammals, इनके पास intra-abdominal testes होते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर इनके टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है तो क्या इनमें नॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा टेम्परेचर पर बनते हैं? तो जवाब है नहीं। पर इनकी बॉडी का टेम्परेचर ही 37 डिग्री नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है, लगभग 35-35.5 के आसपास होता है, तो इनके शरीर के अंदर ही नॉर्मल स्पर्म्स बन सकते हैं। तो इन्हें टेस्टिस को बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनली स्क्रोटम के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, वी मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक सम मैमल्स लाइक बैट्स एंड ऑटर्स। बैट्स माने चमगादड़, ऑटर्स माने ऊँट बिलाव। सम मैमल्स लाइक बैट्स एंड ऑटर्स डू शो व्हाट? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो है इनके टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनली आते हैं, बाकी समय वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने जानी टेस्टिस के बारे में, उसकी शेप, साइज, लोकेशन, कलर, ये सब जान लिया। और फिर जब हमने कहा कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में है तो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए है। उसके बाद आपने बोला क्या सभी मैमल्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है? द आंसर वाज नो। जैसे मैमल्स में, एलिफेंट्स के अंदर, मैमल्स में भी किसमें, एलिफेंट्स में, एग-लेइंग मैमल्स में, एक्वेटिक मैमल्स में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। वहीं कुछ मैमल्स जैसे कि बैट्स और ऑटर्स के अंदर टेस्टिस सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान एब्डोमिनल कैविटी से बाहर डिसेंड करके आते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली आते हैं, बाकी समय वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हमने जान ली। अगले लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा टेस्टिस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिटेल में जानना। फॉर टाइम बीइंग, thank you very much everyone. Keep reading your NCERT, keep learning, stay focused, and yes, be confident. Only then you will be making your exam wonderfully well. Once again, thank you. Share this video with all your friends so that they can also learn well. Once again, thank you.